John Locke, and today we are going to study about John Locke. Locke is another prominent English philosopher. Is another prominent English philosopher in the tradition of Western political thought, right? First, we have studied about Hobbes. Hobbes was a predecessor of John Locke. Locke से पहले हम लोगों ने Hobbes को पढ़ा है, और Hobbes जो थे वो Locke से पहले इंग्लिश फिलोसफी में अपनी बातों को कह रहे थे कि किस तरीके से राज्य का निर्माण होता है, हाउ द स्टेट गेट्स कॉन्स्टिट्यूटेड, सोवरेन कैसे बनता है, सोवरेन का क्या काम है, कैसे हम लोग एक एनार्कियल सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। आज जिस शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, वो जॉन लॉक है, और ये शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत माना जाता है या माने जाते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में, क्योंकि इनकी कई सारी बातें आज तक हम मॉडर्न स्टेट में अप्लाई होते हुए देखते हैं। कई सारी चीज़ों को एप्लीकेशन जो है हम लोग मॉडर्न स्टेट में, अगर और ख़ास तौर से लिबरल मॉडर्न स्टेट की बात हम करें तो लिबरल मॉडर्न स्टेट में देखते हैं। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ से हम लोग एक लिबरलिज्म का ट्रैजेक्टरी को भी ट्रेस करते हैं, उदारवाद जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसीलिए जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, या फादर ऑफ लिबरल फिलॉसफी भी कहा जाता है, क्योंकि स्टेट को कितना एक्ट करना चाहिए, किस हद तक स्टेट इंटरवीन कर सकता है इंडिविजुअल के लाइफ में, सोसाइटी में, और भी तमाम इंस्टीट्यूशंस के जरिए, अपने तमाम इंस्टीट्यूशंस के जरिए। यह बात हमें लॉक समझाने की कोशिश करते हैं। स्टेट का लिमिट तय करते हैं लॉक, इंडिविजुअल लिबर्टी को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं लॉक, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल लिबर्टी का क्या स्थिति होगा किसी भी समाज में? इंडिविजुअल लिबर्टी, या he talks about individual liberty. We'll talk about that, कि to what extent the state should intervene into the lives of the people, into the society, right, into the choices that people make. So one is about, extent of the limiting the let's say interventionist capacity of the state. This is one thing that makes Locke prominent hero of liberalism. Secondly, he talks about individual liberty. And third, he talks about property. This is more significant than anything else. First one is extent to which state can intervene. So it's about arbitrary intervention of the state, limiting the arbitrary intervention of the state. No, it cannot. I mean, yeah, that needs to be restricted. That's what the idea is. Like individual liberty. This is about intervention of the state. Of course, intervention in individual life will restrict your liberty. है ना? जोर से बोलो। कई चीजों में इट्स अबाउट इकोनॉमिक स्फेयर में जरूरी नहीं है कि अगर स्टेट इंटरवीन करता है तो इंडिविजुअल लिबर्टी को ही डैमेज कर रहा है, सोसाइटी को भी तो डैमेज कर सकता है स्टेट। सभी लोग वर्शिप करेंगे, इंडिविजुअल लिबर्टी तो है ही, सोशल स्फेयर में भी तो रेस्ट्रिक्शंस को क्रिएट कर सकता है, इकोनॉमिक स्फेयर में भी तो इंडिविजुअल लिबर्टी विल गेट इंपैक्टेड, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? सो देन स्पेसिफिकली ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल लिबर्टी, life, and the major theory of Hobbes is derived based on three major natural rights, which is right to life, liberty, and property. Right to life, liberty, and property. You see, these three components
that Locke introduces in his theory makes him, father of liberalism. Property specifically, of course liberty is there, but property specifically, because no one has talked before, Locke with such a great emphasis, where property becomes individual right. It should be treated as an individual right. No one has philosophized it with such an emphasis, with such an rigor as Locke has done. समझ में आ रही है बात आप लोग को? So that is why, इसलिए हम लोग लॉक को कहते हैं कि एक फादर ऑफ लिबरलिज्म है, क्योंकि यहां से एक अद्भुत शुरुआत होती है कि राज्य किस स्तर तक जाकर मनुष्य के जीवन में, समाज के जीवन में किस स्तर तक जाकर हस्तक्षेप कर सकता है. लॉक कहता है कि स्टेट शुड बी नथिंग बट वर्क एज अ मियर नाइट वॉचमैन. यू सी नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट जो है लॉक इन्वोक करता है. नाइट वॉचमैन वही कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग चौकीदार का कॉन्सेप्ट कहते हैं. समझ में आ रहा है बात? तो चौकीदार क्या करता है कि उसका मिनिमल इंटरफेरेंस होता है, सिवाय इस बात को देखने के लिए कि यू आर द जेन्युइन पर्सन टू इंटर इनटू दिस अपार्टमेंट और नॉट. इससे ज्यादा चौकीदार कुछ नहीं करता है. और क्या लेकर जा रहे हैं? कहीं बम वम तो लेकर नहीं जा रहे हैं ना. एक बार स्कैन कर लिया, फ्रिस्क कर लिया आपको, और उसके बाद आपको जाने देता है. चौकीदार हैज नथिंग टू, नो बिजनेस टू डू कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, किससे क्या करने जाना है, क्या बात करिएगा. ये सब पूछता है चौकीदार आपसे? कभी भी नहीं पूछता है ना. वो सिर्फ पूछता है कि मैडम कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, और आपको फ्रिस्क कर लेता है या आपसे एक एंट्री लिखवा लेता है. दैट्स इट. सो यू सी द मिनिमलिस्ट बिजनेस ऑफ द स्टेट, कि स्टेट अपना मिनिमल स्फेयर में ऑपरेट करेगा और मैक्सिमम स्फेयर जो है वो इंडिविजुअल का, सोसाइटी का जैसे ऑपरेट हो रहा है वैसे होने देगा. ठीक है, आई बात समझ में? समझ रहे बात ना? सो ये तमाम बातें कोई अगर लेकर आता है तो वो जॉन लॉक लेकर आता है. इसलिए लॉक को हम लोग फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं. लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तीनों सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो लॉक उठाकर लाता है और एक ग्रैंड थियरी को बिल्ड करता है, जो स्टेट की भी थियरी होती है, जिसमें इंडिविजुअल लिबर्टी की भी बात होती है, जो स्टेट के ओरिजिन की भी थियरी होती है, या सोवरेन के ओरिजिन की थियरी होती है, किस तरीके का एक पॉलिटिकल सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट होगा, इसकी बात की जाती है, जहां पर इंडिविजुअल लिबर्टी की बात होती है. ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना? और साथ साथ इसके हम लोग प्रॉपर्टी का बात भी देखते हैं. इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ साथ प्रॉपर्टी का क्या रिलेशन है, कैसे प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी बनकर आ जाता है. क्योंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये भी रहा है कि वी ओ थिंग्स इन कॉमन, राइट? एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट ये भी रहा है. वी ओ थिंग्स इन कॉमन. नेचर हैज गिफ्टेड all of these things to all of us, right? and खास तौर से एक मार्क्सिस्ट फिलोसफी का ये ओरिएंटेशन रहा है कि प्रॉपर्टी should never be considered as individual right के रूप में, है ना? right to property, this is something which runs counter to the idea which nature has given things to all of us. ठीक है ना? so कैसे हमारा हो जाता है? how are we the owner of that property? how do we become the owner of that property is a central question to ask. कैसे ये जमीन जहां से let's say माइका निकल रहा है becomes Ambani's property, Adani's property. How? Ambani is an individual guy, right? He runs a company, but he is an individual. है ना? Adani is an individual. Or for that sake, you are an individual, I am an individual. How come this place becomes mine? And I can raise, tall apartment on it, I can charge as much money as I wish. How this place became mine? Now this is something which Locke will point it out to you. Right? How property becomes individual possession, let's say.
That is what Rousseau will suggest you. The day a man stood on a piece of land and said that it belongs to me, उसी दिन से inequality started to take the root of the society. Now Rousseau, from Rousseau, Rousseau has a deep influence on Marx. Rousseau had deep, immense influence on Marx, right? So it might be possible that Marx have read Rousseau and have, was deeply influenced by him, right? Yeah. So one cannot deny that possibility. However, Locke talks about something different. When you mix your labor to something or on some object, it becomes your property. When you mix your labor जब आप अपना श्रम ओवर एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के ऊपर में या किसी भी चीज के ऊपर में जब आप अपना लेबर को इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप उसको प्रॉपर्टी के रूप में एक्वायर कर सकते हैं, तब वो आपकी संपत्ति बन जाती है. ठीक है, आई बात समझ में? Let's say if you planted a tree and you regularly take care of that tree will become yours, the fruits will be yours because you are the one who has taken care of it, right? So when you mix your labor over something, it becomes your property, it converts into your property. ठीक है? And this is how those properties which were commonly owned started to become individual property. ठीक है ना? इस जमीन के टुकड़े पे मैं खेती करना शुरू कर दिया, ये फसल मैंने उगाया, ये मेरी फसल हो गए, है कि नहीं? है ना? क्या हंस क्या रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? स्टेट की ओरिजिन के बारे में बात किया इसने कि कैसा स्टेट होगा, क्या उसका काम होगा, क्या करेगा, ये तमाम चीजें वो बताता है. इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर में एम्फसाइज करता है और प्रॉपर्टी खास तौर से. ये तीन सेंट्रल एलिमेंट जो है हॉब्स के लिए, हॉब्स को हॉब्स बार बार मैं कह रहा हूं, लॉक को, राइट, फादर ऑफ लिबरलिज्म बनाने के लिए खड़ा कर देता है. समझ में आ रही बात? तो इसी इन तीनों सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स के कारण लॉक को, वही तो मैं कह रहा हूं. अरे बाबा, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का क्रिएटर, उसका प्रोटेक्टर कौन होगा? इंश्योर कौन करेगा? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का प्रोटेक्टर कौन होगा? स्टेट होगा ना. स्टेट के जरिए ही ना प्रोटेक्ट होंगे आप लोग. नेचुरल राइट है, तीन तरीके का नेचुरल राइट है जो इक्वली नेचर ने सभी को दिया है. लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी. लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए आपको कोई तो एजेंसी चाहिए, कोई तो एक इंस्टीट्यूशन चाहिए. तो स्टेट से बड़ा इंस्टीट्यूशन और क्या हो सकता है? समझ में आ रही है बात आप लोग को? तो इसीलिए लॉक एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर है हमारे सामने में. लॉक का जन्म कब होता है बताइए? आप लोग में से कोई पढ़ के आया है? 1632 में लॉक का जन्म होता है. यू रिकॉल इंग्लिश सिविल वॉर कब होता है? 1642. 1642 में इंग्लिश सिविल वॉर होता है. 1642 है ना इंग्लिश सिविल वॉर? एंड चेक इट वंस अगेन.
English Civil War is 1642. Am I right? And Locke was born in the year 1632. 10 years ago, Civil War. So one cannot say he was contemporary of Hobbes. He was not contemporary of Hobbes. Contemporary होता है जैसे मैं और आप हूँ, लगभग लगभग उसी एज ग्रुप में, मैं 30s में हो सकता हूँ, आप 20s में हो सकते हो, but we are more or less in the same age group, right? He was much junior, you know, to Hobbes. Locke was much junior to Hobbes, right? लेकिन the time frame is almost similar. Yes, that's what. Right? The time frame is लगभग लगभग similar. समझ में आ रहा है बात ना? So those incidents which were impacting Hobbes were also more or less having an influence on Locke. You see, 10 years later on, 1642, Civil War starts. So it's just like, you see, he was 10-year-old then. So he was also witnessing those incidents which Hobbes was witnessing, right? So those same incidents had a similar effect, not similar, but it too had effect upon Locke. जिन चीजों ने हॉब्स को प्रभावित किया, उन चीजों ने, वही कॉन्टेक्स्ट ने लॉक को भी प्रभावित किया. यह अलग बात हो सकती है कि उसने किस तरीके का प्रभाव डाला. हॉब्स के लिए कुछ अलग प्रभाव हो सकता है, लॉक के लिए कुछ अलग प्रभाव हो सकता है. अधिक गरीबी में रहने के कारण कोई एक बच्चा, आप ही के क्लासमेट, मान लीजिए 2 क्लासमेट है ना, एक बहुत गरीब है और आप भी बहुत गरीब हो, लेकिन हो सकता है एक बहुत गरीबी के कारण कोई उठकर डाकू ही बन जाए, क्रिमिनल ही बन जाए, और एक मेहनत कर कर हो सकता है कि लेट्स से बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है, अडानी भी बन सकता है ना, फ्रॉम नथिंग टू टॉप बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड. सो समझ में आ रही बात आपको मैं कहना चाह रहा हूं. सो द कॉन्टेक्स्ट माइट हैव अ डिफरेंट इन्फ्लुएंस, बट इट वाज ऑलमोस्ट सेम. यू नो, द पार्लियामेंट, मोनार्क के बीच का, पार्लियामेंट और मोनार्क के बीच का लड़ाई हॉब्स भी देखकर बड़ा हुआ और लॉक भी देखकर बड़ा हुआ. समझ में आ रही बात आपको, है ना? हॉब्स भी वो लड़ाइयां देख रहा है, लॉक भी देख रहा है. आपने हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा है, पढ़ा है, कंजर्वेटिव हुआ करता था पार्लियामेंट में, है ना, रेडिकल्स हुआ करते थे पार्लियामेंट में, जो सबको वोट दिलाना चाह रहे थे, है ना, लेवलर्स जिसे हम लोग कहते हैं, रेडिकल को, सबको लेवल करने की कोशिश जो लेवलर्स का रहता है ना, वो लेवल करने की कोशिश भी चल रही थी. समझ में आ रही है बात आप लोग को ना? बहुत लोग रेडिकल्स थे, बहुत लोग कंजर्वेटिव भी थे, है ना. उसी सब में वही सब कॉन्टेक्स्ट जो हॉब्स के लिए था, वही कॉन्टेक्स्ट लॉक के लिए भी उठ के आ रहा है. 1660 में हम देखते हैं कि फिर से मोनार्की को स्टैब्लिश किया जाता है आफ्टर द इंग्लिश सिविल वॉर 1649 में, जब क्रॉमवेल 11 सालों तक रूल करता है बिना कोई मोनार्क के. लेकिन 1660 में जाकर हम देखते हैं कि फिर से इंग्लैंड में हुआ था. हाँ, तो 1660 में हम देखते हैं कि फिर यहां पर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ला देता है ना. और देखिए 1660 तक आते आते बच्चा जो है लॉक जवान हो चुका है, उस पर इन्फ्लुएंसेस आने शुरू हो चुके हैं, सारे चीजों का इंपैक्ट उस पर बढ़ रहा है, ठीक है ना. सो ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना. 1660 में एक मजेदार बात यह भी है कि 1660 में मोनार्क को जब एस्टैब्लिश कर दिया जाता है और पार्लियामेंट भी रहता है, इसका यह मतलब नहीं कि ये दोनों के बीच का टसल खत्म हो चुका है. चार्ल्स टू राजा बन जाता है. चार्ल्स टू तो अपने जीवन काल में ठीक ठाक रूप से अपना काम चला लेता है, लेकिन लास्ट तक आते आते उसके टेनियर में भी गड़बड़ी शुरू हो जाती है. उसके बाद फिर इसका भाई बनता है और वो कॉन्टेस्टेशन पार्लियामेंट के साथ लगातार चल रहा है. समझ रहे हैं बात आप लोग ना? नहीं हुआ मतलब कैसे कोई छोड़ सकता है यार, तुम पुराने जमींदार हो
तुम्हारी सारी जमीन चली गई, इससे क्या तुम्हारा अकड़ चला जाएगा? जमींदारी तो रहेगी, एक दो जनरेशन के बाद जाएगी। समझ रहे बात ना? इट्स अरे आई एम सेइंग दैट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैन बी ट्रैक डाउन फ्रॉम हियर, द बिगिनिंग, right? So that is important to know, but that doesn't mean the desire to assert itself against the parliament was completely restricted. अब नहीं हो सकता है कुछ, अब बैठ जाए चुपचाप से, ऐसा नहीं था। कोशिशें चल रही थी उस समय में भी। So you can see this tussle between parliament and monarch। क्या हुआ? एक सेकंड, let me just, so the tussle between parliament and monarch continued to have influence on Locke as well. That is something important. What is more interesting for both of you and to all of you to understand that Locke initially was more oriented toward monarchy. ठीक है? He was conservative in his nature and he was in a way more oriented toward defending monarchy. Yes, but later on he shifted. So as you see, Locke growing up in a family which defended parliament. His father supported parliamentarians, but Locke was more oriented toward monarch. ठीक है? In his initial days, and he was conservative. Now as a student, when he grew up, he went to Oxford, Christ Church College in Oxford, where he started to teach, and then he also enrolled himself medicine के study में, in the study of medicine. इसको मन किया कि मैं भी थोड़ा दवाई ववाई के बारे में पढ़ूं, ठीक है? So he started to train himself in medicine. There he met with an important person, first Earl of Shaftesbury. He was a student at Oxford or teacher? He was teacher. He joined as Christ Church College as teacher. First Earl of Shaftesbury. He taught men. No, he enrolled himself in medicine courses as a student. Yes, there he met with Earl of Shaftesbury. It can be. बाहर में तो कर ही सकते हैं आप, इंडिया में सब इम्पॉसिबल है। जीवन भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, बाद में जाके मेडिसिन पढ़ने लग गया। अभी भी आप कर सकते हैं। If you have a 10th, 12th in sciences, you can go and study medicine later on in your life if you want to. So this is not a big deal. First Earls of Shaftesbury. Shaftesbury. This is an Shaftesbury. 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 So this is, this is a title. This is a title, Earl, right? Shaftesbury, maybe the name of the place. I haven't searched it. You can check it out, So he met with first Earl of Shaftesbury, right? And he was a devout parliamentarian. He was a devout parliamentarian. ठीक है? समझ में आ गया बात? So medicine पढ़ने के दरमियान this man got sick. He came in consultation to that department and Locke was there. So he met with him. Locke gave him the treatment and eventually they became a good friend. Right?
And within a year after meeting with Shaftesbury, you know, Locke realized the importance of parliament. So you will see a huge shift in the writing of Locke, you know, writing in favor of monarch to, you know, parliament. ठीक है? In favor of monarch to parliament. Right? You will see a huge turn. Shaftesbury, yes. Now, you know, this change was so deep in Locke, that he was further, you know, exiled for planning and plotting against the king, you know, conspiracies, for being involved in the conspiracies to kill the king. And he was exiled from England. Okay? So you can understand the kind of influence that this guy, you know, Earl of Shaftesbury had on Locke. ठीक है? नाइटहुड होता है ना, जैसे टाइटल होता है, वैसे अर्ल भी टाइटल है. हो सकता है कि एक जगह का आप सबसे बड़े जमींदार है, तो आपको, यू नो, आपको change. ठीक है? And then things start to change in Locke's life, you know, and he gets too much involved into politics, parliamentarian politics, है ना? इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उसे एग्जाइल कर दिया जाता है, बिकॉज वो कॉन्स्पिरेसीज, प्लॉट्स, प्लानिंग करने लगता है, और कई अटेम्प्ट जो होते हैं राजा को मारने के लिए, यू नो, सम ऑफ देम आर not so important from examination point of view, but just for the sake of understanding, you know, some of the I mean, the conspiracies involve the exclusion crisis. It's named as the exclusion crisis, the Rye House plot to kill Charles II and his brother James. Yeah, these are the name of the plots. ठीक है ना? So you see, कितना इन्वॉल्व हो जाता है लॉक पार्लियामेंट के पॉलिटिक्स में. या ही वॉज एक्साइल फ्रॉम द कंट्री. तो वो राजा को ही मारने का प्लान बनाने लग जाता है, ऐसा कहा जाता है. देयर इज नो कॉन्क्रीट प्रूफ अबाउट इट, बट ही वॉज एलिज्ड एंड एज अ रिजल्ट ही वॉज एक्साइल्ड. ठीक है? सो सॉरी, सो हियर वी सॉ दैट ही गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, you know, from writing in favor of monarch to become, you know, later on he became what? A great parliament, right? Parliamentarian, I mean, great supporter of parliament. From supporter of monarch to supporter of parliament. So you can demarcate these two phases of Hobbes's life, you know, through his texts. Now what I am doing is I am demarcating these two phases of Hobbes' life, you know, sorry, Locke. Remind me if I say Hobbes, it's not Hobbes, it's Locke. ठीक है, I stand corrected. This is Locke's life, you know. We can understand these two phases through his texts. ठीक है? So while he was,
both were, ruling there. It was not like that. The contestations were happening. ठीक है? Now you see, we'll study when Locke was in favor of Parliament. He wrote, two major tracts on government, known as two tracts on government. When he was in favor of monarch, initially he was in favor of monarch, right? So he wrote two tracts on government. ठीक है, मैं शॉर्ट, अच्छा ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बेकार है. Two tracts on government, that's the name of the book. And another essay on human nature. Laws of nature. These were the two central books which Locke wrote while he was, defending monarchy. Now, what are the major arguments of that book? That you need to know. ठीक है? Supporting monarchy. While he was supporting monarchy, this comes from here, right? So these were the two major texts that Locke wrote, right, when he was favoring monarchy. So what are the major argument of that text? Let us quickly, try to. So initially Locke believed that human condition is defined by conflict and hostility. मनुष्य का जो जीवन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी जो है वो रहता ही रहता है. हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी. आपका कभी न कभी किसी न किसी से दुश्मनी होते ही रहता है, विवाद रहता ही रहता है. ठीक है? सो मनुष्य का जो जीवन है, ह्यूमन कंडीशन, इज समहाउ वी फाइंड दैट conflict and hostility becomes an integral part of human condition. Now, how it can be mitigated? This is the question. If this remains an integral part of life, let's say, or integral part of human condition, so how this can be mitigated? This becomes an important question for Locke. इसको कैसे खत्म किया जाए? ये जो विवाद जो जीवन भर मनुष्य का चलते रहता है, ये जो झगड़ा लड़ाई होते रहता है मनुष्य के जीवन में, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? हाउ इट कैन बी मिटिगेटेड? दिस बिकम्स अनदर सेंट्रल क्वेश्चन. हाउ इट कैन बी मिटिगेटेड? कैसे इसको खत्म किया जाए? राइट? ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जीवन हमेशा लड़ाइयों से भरा हुआ है, विवादों से भरा हुआ है, तो ऐसा जीवन तो कोई नहीं जीना चाहेगा ना. तो इसको खत्म कैसे किया जाए? ये लड़ाइयां, ये विवाद कैसे खत्म होगा? तो लॉक कहता है कि इट कैन बी मिटिगेटेड ओनली बाय फॉलोइंग द कमांडमेंट्स ऑफ द गॉड. It can be mitigated only by following the commandment of the God. ये विवाद, ये लड़ाइयां तभी खत्म होगी जब ईश्वर के द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो सिद्धांत सुझाए गए हैं, जब आप उन ईश्वर के द्वारा, परम पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए कमांडमेंट्स को, दिए गए उनके आइडियाज को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके रूल्स को जब आप पालन करते हैं, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं?
कि यह जो जीवन को जो निरंतर जो perennial conflict and hostility which is defining your life and condition, human condition, can be mitigated. Sir, this question also raised by Locke. How it can be mitigated? Locke, yes, this is question raised by Locke only. And answer also given by Locke. Locke, yes. How it can be, no, this is not the question. I'm using it to teach you. How it can be mitigated? If you observe, if you follow the commandment of benevolent God, ठीक है? If you follow the commandment of benevolent God, but how to know what is the commandment of benevolent God? Someone might ask this question. ईश्वर क्या चाहता है हमें क्या पता, है ना? क्या उसके रूल है हमें क्या पता? Locke will immediately respond saying that you can get it revealed through religion, your religious truth. So partially the commandments of God are there in the religious truth. जो धर्म के द्वारा सत्य कहा गया है, जो धर्म के द्वारा बातें कही गई हैं, उसके थ्रू, and partially through laws of nature. Now again, laws of nature क्या हो सकता है? ये नहीं, वो हॉब्स के लिए था, लॉक के लिए नहीं. वैरी करता है, सब थिंकर अपने अपने तरीके से कर रहे हो, किसी को पता तो नहीं है क्या है, यही कोई रूल है, सब अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है. एक सेकेंड, यस, पार्शियली बाय द रिलीजियस ट्रूथ, जो धर्म में सही है वो कमांडमेंट हो सकता है. व्हाट आर द कमांडमेंट ऑफ गॉड? यू नो, दैट समथिंग विच यू कैन आस्क, है ना? सो लॉक विल रेस्पॉन्ड कि आप कुछ चीजों को तो धर्म के हवाले से समझ सकते हैं और कुछ चीजें जो प्रकृति के कानून हैं उसके हवाले से समझ सकते हैं. लेकिन एक प्रॉब्लम आता है, प्रकृति के कानून बहुत एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन्ड नहीं है. समझ में आ रही है बात? जो प्रकृति के कानून है वो बहुत एक्सप्लिसिटली कहीं पे मेंशन्ड नहीं है. इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड. सो देन व्हाट टू डू? यहां पर आकर जो है मामला लॉक का फंसता है. लॉक कहता है कि अब क्या किया जाए, कोई क्या करेगा, जब एक्सप्लिसिट नहीं है बहुत ज्यादा तो कैसे कर सकते हैं? He also talks about law of nature. He will also talk about state of nature. Hang on, है ना? Now what to do? How to know the laws of nature? So here Locke will directly say, by obeying the ruler, because he is an extension of God. समझ में आ रहा है बात? Yes. बहुत पीछे चला गया. So that's why I asked you to be careful. Since you see monarchy is always defended by that argument कि monarchs are the extension of God. समझ रहे हो बात ना? It's always defended by the same argument कि ईश्वर का अवतार है, नारायण अवतार, विष्णु अवतार, राम का अवतार, जो जो अवतार आपको लगाना है. All those Rajputs from Raghuvanshi says कि हमारा तो राम का कुल है, we are the ruler, right? है ना? Just like you will see all the Gauris claiming that हम मोहम्मद गौरी के संतान हैं, हम फलाने के संतान. So similarly, you know, all the Mughals, you know, हम मुगल के औलाद हैं. Mughals were the, you know, natural inheritor of ये वो. तो all monarchy, all sorts of monarchy, you know, more or less. What I'm trying to suggest to you is being defined as an extension of God. Locke is using the same premise. How will you comprehend the law of nature?
You do not need to understand. If you do not understand, just follow the ruler, obey the ruler. Whatever he is suggesting, that is something which is based on the idea of law of nature. समझ में आ रहा है बात? जो भी वो कह रहे हैं, जो भी वो आपको बता रहे हैं, वो लॉ ऑफ नेचर के अनुसार ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी ऑब्जेक्टिव है शांति ही स्थापित करना. तो अगर पीस को लॉ ऑफ नेचर बनाते हैं तो आप थोड़ी तय करें, यहां से तय होगा तो आप फॉलो करिए सिर्फ. समझ में आ रही है बात? है ना? पीस और कॉपरेशन अगर बेसिक बुनियाद है तो वो तो जो रूलर कहेगा वो फॉलो करिए. सिंपल सा बात आपको लॉक जो है सो की कहता है. ही इज अ मॉडर्न थिंकर. So what is that? Is there something universal? Everyone is interpreting law of nature according to their own ideas. कोई कहीं पे prescribed थोड़ी है. He was able to comprehend 19, someone might comprehend 35. समझ रहे हो बात ना? है ना? किसी को एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है, किसी को 2 किलोमीटर दिख जाएगा. क्या दिक्कत है? 2 किलोमीटर दिखेगा, 2 ज्यादा दूर तक दिखेगा. किसी को पीछे का भी 1 किलोमीटर दिख सकता है. सिर्फ आगे का ही देखना थोड़ी है, पीछे में भी आंख हो सकता है. द थर्ड आई, एनीथिंग कैन हैपन मैन. समझ रहे हो? दिस इज फिलॉसफी. All you need to do is to stretch your mind to the extent you can think and contemplate and then write it down. नहीं, ऐसा कौन कह रहा है? Philosophers will defy what is real. That's what I told you. Aristotle, Plato will say what is real. The things that you are seeing is real. Yes, जो मेजर करते हैं उनको तो बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है. We are confining ourselves just to political philosophy. They study everything. They will also study his ideas on metaphysics, his ideas on other stuff, moksha, maya, santi, asanti, liberation and all. We are sticking to just to political. That's the difference between philosophy done by political scientists and philosophy done by philosophers person. Because they then, philosophers then goes to a wider domain of studying things. But as a political science student, we are supposed to stick to political philosophy. Right? समझ में आ रहा बात ना? And philosophy is the mother discipline, by the way. You all should understand that. Everything is philosophy. Without philosophy, there cannot be anything. है ना? So, Locke suggests that if we obey the laws and commands of our civil magistrate, है ना? Civil magistrate or / the ruler, political ruler, then we can be certain that we are following the law of nature. That is the law of God. The laws of nature are what? Laws of God. So, if we are following the ruler or let's say civil magistrate, this means what? We are following the ruler. He says that it is not important to know what the law of nature prescribes. Now listen to this, lot of queries are here. It is not important to know what the law of nature prescribes, but it is important, or all that we need to do is to follow the ruler. So, it is not important what it is prescribed, because it is not explicit. It is not explicit what the laws of nature are. But since these are the laws of God and ruler is an extension of God, you just follow the ruler and you are following the commandments of the God. You see, A is equal to B is equal to C वाला मामला है. ये अगर आपको सी ए को जानना है तो आप बी को फॉलो कर लो सिंपली, क्योंकि बी जो है वो ए से रिलेटेड है. इफ ए इज गॉड, बी इज रूलर एंड सी इज सब्जेक्ट. नाउ इफ हाउ सब्जेक्ट विल मीट द गॉड? सिंपली बाय फॉलोइंग द रूलर, because he is directly related to him.
समझ में आ रहा है बात ना आप लोग को अब? So that is what you know, and that is oversimplification, but that is something which is good at your level, you know. बहुत सारी चीजें I am also simplifying it, but at your level, at just undergrad, I am not going in detail about explaining all those things, but at undergrad level, you know, this is sufficient for you. अभी आप आगे जाएंगे, you will originally read Locke, तब आपको और उसका extensive debates पता चलेगा, but I am not pushing you there right now, because that is not required, that's not the part of the job right now. ठीक है? So I am making it more simplistic so that you can hold on the concept for a long time and you can comprehend the ideas, crack your questions. ठीक है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बात ना? सो हम लोग अभी दो बुक को डिस्कस कर रहे हैं, दोनों के आइडियाज को कलेक्टिवली हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या है? 2 ट्रैक्ट्स ऑन द गवर्नमेंट और एसेज ऑन लॉज ऑफ नेचर. ये दोनों बुक में जहां पर कि लॉक मोनार्की को डिफेंड कर रहा है, वहां पे उसके सेंट्रल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, हम उन सेंट्रल आर्ग्यूमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है? Am I being clear? समझ में आ रहा है? Very good. So for young Locke, and he is young at this moment, you know, और ये वेस्टर्न फिलोसफी में खूब चलता है, यंग मार्क्स, ओल्ड मार्क्स, यंग लॉक, ओल्ड लॉक. ठीक है? इस तरीके से डिस्टिंक्शंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, बिकॉज बिकॉज देयर आइडियाज इवॉल्व. नो वन इज स्टैग्नेंट, यू नो. आइडियाज ऑल्सो, यू नो, gets evolved. Your ideas, your philosophy also evolve. You also evolve along with your ideas and philosophy, and you take different position at different point of time. So that's why we uses this young, you know, as a category, you know, to deter, you know, also determine and differentiate, you know, the departures in their ideas, young and later, young and old, so on and so forth. We do that, right? Young Hegel, later Hegel, so on and so forth. You can do that. I don't know. Yes, you don't have Hegel, right? So the extensive power of the ruler is derived from the god, and once you are obeying the ruler, that means you are obeying the god. So that means what? You know, you are obeying the commandments of the god, that is law of nature, right? Which means again another important thing, that you cannot use your faith, you know, to defy the commandment of the ruler. समझ में आ रहा है बात ना? You cannot use your faith to defy the commandment of the ruler. That means you cannot go against your ruler. समझ में आ रहा है बात ना? Your lord, I mean your king, your monarch. समझ में आ रहा है बात ना? Since your faith, since God himself provides that power to monarch, even your religion cannot come and stand, or can be used as a justification to defy the monarch. समझ में आ रहा है बात? So he is cancelling all the opportunities of defiance, of rebellion, है ना? विद्रोह आप नहीं कर सकते हैं, धर्म के आधार पे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म तो राजा के साथ में ही खड़ा है. समझ में आ रही बात ना? हाँ, पार्टली यस. तो आप धर्म के अनुसार भी नहीं खड़ा मतलब कि उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, राजा के अगेंस्ट जा सकते हैं. कोई धर्म आपको जस्टिफिकेशन नहीं देगा. King is an extension of God, right? So the individual autonomy की बात यहां पर बिल्कुल खत्म हो जाती है. There is no individual autonomy. ठीक है? बिल्कुल individual autonomy नहीं है. All what one subject is supposed to do is to follow and obey, rather obey, not just follow but obey the monarch. Any sort of disobedience is treated as what? Is treated as an act of rebellion and can be punished.
समझ में आ रहा है बात? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इज नॉट अलाउड, इट्स प्रोहिबिटेड. You have to follow the king, obey the king. Obey the king. So these were the same major argument in the two, major texts that Locke provides to us, in favor of monarchy. And here you can see, you see how he is defending monarchy. है ना? Is it clear now? You can understand how he is defending the monarchy. Now let us come to his another major text that he wrote in the year 1667, and this is a year after meeting the Earl of Shaftesbury. It's a year after. Within a year, he got completely converted. I mean, transformed, not converted is the right word to say. There is this massive transformation that is happening in Locke, and he is writing a text on essays on toleration. ठीक है? No, this is essay on toleration. Within a year. Which book? 1667. Yes. So here, I mean, this is a very interesting essay of Locke. Here he he completely turns his ideas upside down. है ना? पूरा ही अपने आप को, अपने ideas को पलट देता है, and makes a complete shift in his argument. Prior he was defending monarchy, अब ये पूरा पार्लियामेंट को डिफेंड करने के उसमें आ जाता है. सो इसमें क्या लिखता है लॉक? व्हाट इज हिज आर्ग्यूमेंट? द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल रूल इज टू एस्टैब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल रूल? लिख लीजिए. द पर्पस ऑफ political ruler establish peace and So from here he got changed. yes, from here he got changed. The purpose of political rule or ruler is to establish peace and security. So the sovereign should not intervene with those of his subjects' action which doesn't impact the peace. समझो इस बात को. The purpose of political ruler is to secure peace and security. तो वो कहता है कि राजा को, है ना, सोवरेन को, फॉर दैट सेक, बता रहे हैं ना, कोई भी हो सकता है वो. आप सोवरेन राजा के रूप में भी तो हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो जो सोवरेन होगा उसे ये कतई अलाउ नहीं है कि वो बिना वजह अपने सब्जेक्ट के एक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करे, अगर उसके सब्जेक्ट का एक्शन इस पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करता है. तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप एक ऐसे लॉक को देख रहे हैं जो लिमिट करना शुरू कर रहा है स्टेट को, कि अननेसेसरी इंटरवेंशन नहीं करना है. समझ रहे हो ना? तुम ऐसे बैठे हो, मुझे क्या दिक्कत है? अब क्या हम लोग देखते हैं कि कई समय में आप अगर क्रॉस लेग बैठे हुए हैं और एक बूढ़ा होगा, वो ऑफेंड हो जाए, ठीक से बैठो. अरे भाई वो बैठा हुआ है, उसको जैसे बैठना है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन आप उसको, वैसे लोगों को देखते हैं ना, अननेसेसरी इंटरवेंशन करते हुए. समझ रहे बात ना? आप कुछ कर रहे हैं, अब उसे आपके ओर अपना ध्यान चाहिए, है ना? तुम ऐसे क्या बैठे हो, हंस क्यों रहे हो? आप भाई तुम हंस रहे हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है? उससे मेरा क्या हो रहा है? तुम हंसो. लेकिन आप कई लोगों को देखेंगे कि कोई आपको इंटरवीन कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, ठीक से बैठो, ये करो, ठीक से करो, अननेसेसरीली.
उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, यू अंडरस्टैंड दैट, मुझे कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आई एम डूइंग फाइन, दिस पीस एंड सिक्योरिटी इज नॉट बीइंग थ्रेटेन्ड out of the action what you are doing, but still I will try to control, intervene. So this unnecessary intervention of sovereign should not be allowed. That is number one, right, which Locke is trying to point out over here, specifically with those action which doesn't threaten the peace and security. So people should be let free to do whatever they want to do. What does this mean? What does this mean? So yes, you should be let free to do whatever you want to do. I mean, go and chill out with your friend. That's all right. If your action do not disturb the peace and security of this place, you can chill out. Who is stopping you from doing that? But there will be a state saying, hey, तुम ऐसे कैसे घूम सकती हो? एक लड़का एक लड़की साथ कैसे चल सकता है? What is happening because of that? A couple is sitting in a park and someone comes and starts to beat them, tries to call their parents, Bajrang Dal, whatever Dal, and whatever it is. Now what is this? So you see, this Valentine is coming up, Abhi. Abhi, you will see lot of people, you know, invigilating around, trying to get control, you know, hold of those guys, girls. They have made a squad, team बना दिया है वैसे वैसे लोगों का. हाँ नहीं, how can you say they are random लोग? How can, no, even if it is an organization, non-organization, but this is not a random log. Because those people are, whatever they are doing, something which is liable to punishment. And if no one is doing anything. I meant that they are not officials, right? No, they are not officials, but then there are several ways through which officials are appointed. How will you say they are not official? Because if they stop you from doing something, and then the police let them do so, or if the state let them do so, the vigilantes. Vigilante means one who keeps, you know, I deciding you should do this, you should do that, this is right, this is wrong, imposing their ideas and their views on the people. This organization was established for euphemism, but now they don't know their first I don't know. I mean, this is something which is contestable. What is eve teasing, what is not eve teasing, and that's debatable thing. What now if someone comes and says ki why these two boys and girls are sitting together, और उठाकर तुमको पिटना शुरू कर देगा, and the police is there doing nothing. So this is how state will intervene. And if the state also, you know, makes a squad, Romeo squad. What is this Romeo squad? Anti-Romeo squad. And how do you write Romeo? Anti-Romeo squad, let's say. This is official squad made by government of UP to catch the lovebirds. Right? Now it's closed. But you see, so what is this? This is unnecessary the point which I am trying to make. Now this is what is known as unnecessary intervention of the state. स्टेट के पीस और सिक्योरिटी को क्या खतरा हो जाता है? एक लड़का एक लड़की एक साथ जा रहे हैं तो क्या खतरा हो जा रहा है? कौन सा वो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं? चलो कोई कह ही सकता है लव जिहाद कर रहे हैं, लेकिन अगर एक ही लेट्स से हिंदू से ही है या मुस्लिम ही है, तब कौन सा जिहाद कर रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग? Just having some good romantic time. Lot of people in our country, you know, struggle to have room, space. एक झुग्गी में पूरा परिवार रहता है, पति पत्नी माँ बाप भाई बहन बच्चे सब रहते हैं. Do they have any place to go? What is the idea of privacy? No, this is not about joking, you know. This is a serious problem. If they want to sit and talk,
Where is the place for them? But this all will take a lot of years in a country to improve because the mentality of people here is like something different. This is not just about mentality of the people, mentality of the people, but people are not encouraged by the, let's say, state. Yeah. What is happening in our case, that people are being encouraged by the state. If they go unpunished, then what will happen? Any three people will become anti-Romeo squad and will find her girlfriend, his girlfriend sitting with the other boy and maro isko, ye kar rahi, ye kar rahi. I don't know. I'm not going into that debate. I mean, this is completely futile, bakwas, futile debate. Worthless debate hai. But the point is ki, what is the point of intervention? So here you will see, and the reason why Locke is saying this. But there is one law, no? There. It is something that it is like in our country. What law? Not law, there is some section like PD is not allowed, so that discourages. What PDS is not allowed? PD is not allowed in our country. What is PD? Public display protection. So that's why Who said this? display protection. Where is this law? Not law, but this is something. No, this is not there. No law as such exists. That is, you cannot be obscene or vulgar on the road displaying, trying to, curtail public morality or so and so forth. Something which is, not reasonable to the public moral, or which is objectionable, rather right word, to the public decency and civility. That is one thing, but then the closed space of, I mean, I'm not saying that they are doing something indecent thing, they're just sitting and chatting. Even then they get beaten up. Their husband and wife were being thrashed for this. They were trying to prove that main iska pati when he was being beaten up. What about that? Yes, there are cases about it. So that is important, unnecessarily. Someone is coming up and he has got some sort of, I'm not talking, but that means what? If no one is doing anything on those guys, let's say, on those vigilantes, they go unpunished, then there is a nexus that is operating. State uses several non-institutional, not formal, informal mechanism. It might use some informal mechanism to do so. So I'm not even alleging the state. The point which I am trying to suggest, and if you will go by Locke's writing once again, the sovereign should not intervene with those of his subjects' action which doesn't impact the peace and security. So if peace and security is something, now how come a boy and a girl or husband and a wife sitting together in a park discussing some of their livelihood things is disturbing the peace and the security of the nation or the state for that sake? But then the state does so, and if it does so, it is unnecessarily intervening. And that is what I was trying to say initially. How Locke curbs the power, of arbitrary intervention of the state in the matter of public life, in the matter of individual life and liberty, and so on and so forth. In his work on Essays on Toleration, he emphasizes this point that a state has no business to enter into the life and world of the people if their actions are not threatening the peace and security. So this point is established, right? So unnecessary intervention is not required, boss. You be at your limit. Now at the time when Locke was writing, you see, there was another problem कैथलिक को लेकर कि सारे लोग कैथलिक हो जाएंगे,
सबको कैथोलिक बना देना है, ये करना है, वो करना है, जो राजा का धर्म होगा वही प्रजा का धर्म होगा। ये अक्सर होता है, समझ रहे हो ना, जो राजा का धर्म होगा वही प्रजा होगा, और जो उस धर्म से नहीं है, कन्वर्ट देम, कोर्स देम टू फॉलो दैट रिलीजन। एंड दिस वाज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रैक्टिस back there in India as well. When Islam came to rule, massive conversion took place. Lot of there were forced conversion. No one is denying that fact. Right? No one is denying that. You go to Western UP, most of the Muslims were Rajput. Lot of them still has Hindu title, Chaudhary. Lot of people call themselves Thakur, lot of people are Chaudhary. So there is no denying of the fact that conversion happened. But now Locke is against that forced conversion. You will get nothing out of that coerced religion. Right? So Locke is saying that why to force people to accept certain religion? Or the religion of a ruler or sovereign for that sake. Let people practice all kind of religion, and this is significant, you see, because he is making a statement at a time when the Catholic, or let's say Catholic king is trying to impose the idea of Catholicism पूरा समाज के ऊपर में. Lot of people were Protestant, lot of people were from different segment of the Christianity as well. You cannot homogenize पूरा का पूरा England into one religion. Who said there was already enlightenment हो रहा है वहाँ पर, Protestantism निकल चुका है, Anglican चर्च, ये चर्च, वो चर्च, Presbyterian चर्च, इतना ज़्यादा वहाँ पे रिलीजन, चर्च में भी को इसको फॉलो करोगे अलग अलग, कौन कह रहा है इतना? क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग है ना, कोई राजा अगर एकदम ये है तो चाहेगा कैथोलिक ही रहे, प्रोटेस्टेंट रहे ही ना. Kill all those Protestant, they are kafirs, bagis, whatever you want to call. Are you getting the crux of my argument? समझ में आ रहा है बात ना? So you see, at that point of time when these all things were happening, there is someone who is talking about toleration, such an important concept, you know, in political philosophy. Not the first one, we do not need to, bring, this is also a wrong idea, because you are talking about concept. We often end up saying that Plato was the first feminist thinker. You need not to be into that haste of saying first feminist thinker. That's methodologically wrong. He was not the feminist at all, because the feminist was not born at that point of time. So you're just trying to blast your context into the context of Plato and trying to say just because he talked about women, and women can be philosopher king, and women can have children without taking up the burden to palofy them for long period of time, bear and rear those children, the state will take care of those children. So women is set free. She not need to marry any one person, she can have sexual partner with anyone she wishes to do. That's what Plato talks about. Now these are the revolutionary ideas, but he never used the word feminist. He was not, feminism was hardly born, but he was the first person, he was the first person at this point of time, because you see, later on Aristotle denies and argues that women are mere the instrument to bear children, that's all, sexual pleasure ke liye hai wo. So you see, in that entire context when women were being treated as sex slave, or let's say instrument of sex, there was someone who was talking such a revolution, but you cannot say him that he was the first feminist thinker. तो वो चीज उस समय पैदा ही नहीं हुआ है यार, फेमिनिज्म आइडिया ही नहीं है इसका, ये तो अभी का है. यू आर ब्लास्टिंग योर प्रेजेंट इनटू द पास्ट एंड ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट. सो डोंट डू दैट, दैट्स अ मेथोलॉजिकल एरर. उस पर कोई बाद में चर्चा करेंगे, जब हम लोग टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में ही बताना चाहिए था मुझे, बट ठीक है, उतना टाइम हम लोग उस पर नहीं देंगे क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन आने नहीं जा रहा, इतना आने जा रहा मैंने करवा दिया. सो द पॉइंट इज, यू सी,
Sovereign should not try to impose religion or force people to convert. If the king does so, the people have right to disobey. Now here you see, now if the king imposes his religion on citizens or subjects, let's say, not citizen per se, on such subjects, subject, Raja में public is थोड़ा problematic idea to say. Raja is more about subject, ruler and subject, right? People gets constituted, I have told you how. ठीक है? So this is talk about monarchy. So rule over the subject, ठीक है? You can write people as well. There is no problem as such. Try to get the concept. If the king imposes his religion on the subject, you know, the subject has the right to revolt, can defy. Now this is a big thing. You see, from monarch, now he is allowing all kind of rebellion. If it is contrary to the religion, let's say, and someone is imposing. समझ में आ रहा है बात ना? So this is a big revolutionary step, isn't it? This is a revolutionary transition in the life and philosophy of Locke. This is revolutionary transition. Now he is allowing people to revolt. He is encouraging people for rebellion. If there is something which is unjust, unlawful, forced, people can rebel. So dissent becomes an important part. And that's why he is father of liberalism. Dissent means refusal. No, I don't believe in this idea. No. Contradictory, contradiction. Whatever you are saying, I do not agree with you. Voice of protest. I can raise my voice of protest. So dissent in a liberal society, liberal means what? To free. Free to do what? To also raise your opinion without being afraid of someone else. समझ में आ रहा है बात? Without being afraid of someone else, you can freely raise your opinion. This lies at the heart of liberalism. Any liberal society would be known by the extent and degree to which dissent prevails in that society. You completely kill this and you are into the domain of monarchy. Have you seen any news channel criticizing Mr. Modi these days? Is not allowed, you know, when Locke is talking about, let's say, this idea of dissent. That is the reason why he is also known as father of liberalism. Because he emphasizes in this dissent. He bases his theory and he also separates his theory based on this idea. लॉक हॉब्स से अलग ही इसीलिए है क्योंकि आप बदल सकते हैं, आप सरकारें बदल सकते हैं, आप सोवरेन को हटा सकते हैं. हॉब्स बिल्कुल अपोजिट हो जाता है और ये इसीलिए अलग हो जाता है क्योंकि आपके तीन प्रमुख नेचुरल राइट, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इफ दैट गेट्स चैलेंज्ड देन यू हैव अनदर एस्पेक्ट कॉल्ड डिसेंट. You can defy it, and that is why he is known as father of liberalism, because he is restricting the state. Then we can defy the parliament, right? Why not? You can defy the state, whose institution is parliament, because state is nothing created out of your consent to protect your life, liberty and property. You can criticize the Prime Minister. He is not sacrosanct body. He is there as a Pradhan Sevak. He calls himself Sevak.
Ironically, he lives in a 5-star and he travels in all the convoy and so on. So have you ever seen a sevak like that? I would love to become like that. I would love to live like a sevak throughout my life. If sevak had so much of luxury, all these netas saying that मैं आपका सेवक हूँ, सेवक, if the sevak is meant to have such a kind of luxurious life, I'll love to become a sevak. Throughout my life, I'll be like that sevak. And I'll ask my children, grandchildren to become sevak. I'll force them, compel them to become sevak. But you see, this is ironical. But they are actually meant to be at your service. However, this is again ironical that critiquing a PM becomes critique against the nation, which is not. PM will come, PM will go. India has seen 12, 13, 15, 16 prime ministers. Prime ministers had changed in this country before you reap a crop. So why to raise this man to a stature saying that this man is something which is, and criticizing him becomes, you are completely cancelling this domain of dissent. Right? But again, attached to it is, no one can impose the religion on the subject. So subject can have multiple relations, है ना? Which they can practice and can coexist. Important thing, which they can practice and coexist. That's what. So every man is obliged to worship his God in the way he believes to be right. This right empowers man to disengage with the religion imposed on them. So here you see the autonomy of individual getting restored. दिख रहा है आपको? Individual का autonomy. There you have ticked that thing like this. Here you are making a sign like this. है ना? While he was defending monarchy, this autonomy to individual completely absent. है ना? Now here you see he is talking about autonomy of the individual. Autonomy मतलब स्वतंत्र. Right? You are on your own. ठीक है? So here you see he establishes the autonomy of the individual. So this is Locke while he is talking about essays on liberation. Sorry, toleration, not liberation. I am really sorry. Essays on liberation is by Herbert Marcuse. Write it down. Liberation. Liberation is a book written by Herbert Marcuse. Liberation. There's another book is One Dimensional Man. Herbert Marcuse. Marcuse. ठीक है? So I think that's all for today.